morning, children. How are you all? I hope, like always, that you are very well at home along with your family members. You should take care, at least more care in this time, because we are fighting with Corona. And you should also be praying to God, as I tell you always. Okay, children? So, this is my message to all the children of Austell Academy, that whatever we are teaching you, please pay attention and do your exercises daily, so that you don't be back in your studies, and you should come back to school with sharper brains and very smart children. Okay, so my first class today is for nursery children. Nursery children, I am conducting your English class in the beginning first. Okay, so up till now, children, we have studied capital A, capital Z, small z. We have completed our course till here, isn't it, children? So now, from now onwards, you will be moving towards the formation of words, how to form small words, and slowly you will move more further with the difficult ones. But if you will study nicely, you will never face difficulties. Okay, so my first class for nursery is based on two-letter words. Okay, which one? Two-letter words. This pen is not working. Let me see this one. Yes, this one is a better one. Two-lettered words. Okay, so all of you, please open your English copies and note down whatever I am teaching you, so that your English becomes very fluent. Okay, so first word is, say A-M-M. A-M-M. Okay, then the next word is, let me show you children now, A-M-M. A-M-M. Then A-N-N. What is this? A-N-N. Yes. Then A-S-S. A-S-S. A-T at. A-T at. Exactly, children. So how many words did we form? Ishika, look here. M, N, S, at. M, N, S, at. Okay. Then B, E, B. Say B, E, B. B, Y, by. B, Y, by. D, O, do. D, O, do. Then G, O, go. G, O, go. B, by, do, go. Okay. So the next word, H, E, he. H, E, he. H, I, hi. H, I, hi. Yes. I, S, is. I, S, is. Then I, F, if. I, F, if. I, N, in. I, N, in. Okay. Then I, T, it. I, T, it. I will give you more words. Today I am giving you 20 words which you will write down in your English copies. Okay. Then M, E, me. M, E, me. M, Y, my. M, Y, my. Then the next word is, look at the word, children. N, O, no. N, O is no. O, F, off. O, F, off. O, N, on. O, N, on. O, R, or. O, R, or. So say along with me, all these two-letter words is the beginning when you learn making words. Formation of the words. Yes.
do, go. He, hi, is, if, in, it, me, me, my, mine, no, no, of, on, all. So this is a list of 20 words which are two-letter words for the nursery kids. You all will note it down and do it in your English copies. Okay, children? So this is the first task for today. This is your classwork. Another classwork will also be given to you. First you note down this one. I hope you are writing it fast, children. Okay, so the next one will be the session of poems. But before that, one more exercise which will be your homework I am going to give you. Okay, I am rubbing this one, children. I hope you have written it. Now, see here. With the small alphabet, using small alphabet, you will do this work. Okay, I want to see it. How many of you remember? Use the first, write the first alphabet, write the first alphabet of the given picture. Okay, this is also for nursery children. Okay, now look at the picture. Suppose I have given you this. What is this, children? This is hat. What is this? Are you able to see? This is hat. Now while answering this, children, remember that you will be writing down the small ABC, H. The small H you will write. This is H for hat. Okay. Then this is a cat. Cat starts with C. So what will you write? C. Okay. Then this is a bunch of grapes. So what are you going to write? You will write small g. These three one I have told you. The rest you will do on your own. Okay. This is a picture of a rose. You can either write down R or you can even write down flower. Both will be considered correct. Okay. Then now H is for hat, C is for cat and G is for grapes. E for egg, you will write down small e. M is for mango, K is for kite, R is for rose, S is for star and U is for umbrella. This is your homework, children, and you will complete it writing small alphabets. Is it okay, children? Are you understanding what I taught you? Okay, so now we will be revising our rhymes as we do always. Okay, sing and say along with me. Hickory dickory dock, hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. The mouse ran down. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, hickory dickory dock. Okay, so my next poem is Cobbler. Say, cobbler, 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 mend my shoe. Cobbler, cobbler, mend my shoe. You know what is the meaning of mend? Means if your shoe is
torn, then you go to a cobbler who sews your shoes and make it again perfect to be worn for the next time. So there is a little boy whose shoe needs to be mended and he goes to a cobbler. And what is he saying? That is all about in this poem. Cobbler, cobbler, mend my shoe. Cobbler, cobbler, mend my shoe. Have it done by 2:30. Have it done by 2:30. 2:30 is much too late. 2:30 is much too late. Have it done by 8:30. Have it done by 8:30. Okay. Cobbler, cobbler, mend my shoe. Cobbler, cobbler, mend my shoe. Have it done by 2:30. 2:30 is much too late. 2:30 is much too late. Have it done by 8:30. Have it done by 8:30. Okay. So these are the rhymes for the nursery children. And which one is the last one which everybody enjoys saying? Johnny, Johnny, yes Papa. Johnny, Johnny, yes Papa. Eating sugar, no Papa. Johnny, Johnny, yes Papa. Eating sugar, no Papa. Telling lies, no Papa. Open your mouth, ha ha ha. La 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 la. La 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 la. That was it for my nursery children, and your English class was being done till now. And now for the nursery children, we move on with our Hindi class. Okay children? So look at the board and please do your homework properly at home and be very good children. हाँ, तो नर्सरी के बच्चों, अब तक हमने अपनी वर्णमाला और स्वरमाला का पूरा ज्ञान किया है, उसे याद किया, उसे लिखा। अब उसके आगे हम कैसे बढ़ेंगे आप वो समझोगे और अच्छे बच्चों की तरह कक्षा में ध्यान दोगे। ठीक है? तो नर्सरी के बच्चों, आज हम लिखेंगे 2 अक्षर वाले शब्द। 2 अक्षर वाले शब्द। सबका ध्यान बोर्ड पर हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है? हाँ, तो देखो बोर्ड पे। क ख ग घ अंगा। च छ ज झ इया। ट ठ ड ढ अणा। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व श। श स ह छ त्र ज्ञ। ठीक है? अब यहाँ तक भी सीख लिया, अ आ ई भी सीख लिया, और अब हम बनाएंगे 2 अक्षर वाले शब्द। ठीक है? चलो बोलो। काला कल। काला कल। दिख रहा है आपको बच्चों? देखो अब दिखेगा। हाँ, काला कल। गला गल। चला चल। छला छल। सबको लिखना है अपनी हिंदी की कॉपी में। फला फल। फला फल। हाला हल। हाला हल। फिर क्या होगा? कारा कर। कारा कर। नारा नर। हारा हर। हारा हर। वारा वर। जारा जर। और मारा मर। ठीक है? फिर बोलो टाबा टब। टाबा टब। आबा अब। आबा अब। काबा कब। काबा कब। साबा सब। साबा सब। ठगा ठग। ठगा ठग। पागा पग। पागा पग। ठीक है? और क्या होगा?
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही 15 शब्दों की सूची काफी है। कल मैं आपको 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द करवाऊंगी, तब तक आप इसका लिखकर और बोलकर अभ्यास करोगे। ठीक है, तो बोलो काला कल, काला कल, गाला गल, चाला चल, छाला छल, फाला फल, हाला हल, कारा कर, नारा नर, हारा हर, वारा वर, जरा जर, मरा मर, टबा टब, आबा अब, काबा कब, सबा सब, ठगा ठग और पगा हुआ पग। समझ में आया? तो ये कैसी सूची बनी है? 15 अक्षर वाली 2 शब्दों वाली सूची, जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलो इतना करने के बाद अब हम थोड़ी सी कविताएं पढ़ लें और अपनी कक्षा को अच्छी तरह से पूरा कर लें। बोलो आसमान में सूरज एक, आसमान में सूरज एक, घर में मेरे पापा एक, आसमान में सूरज एक, घर में मेरे पापा एक, चमचम चमके चंदा एक, चमचम चमके चंदा एक, जैसे मेरी मम्मी एक, जैसे मेरी मम्मी एक, बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर आई हो, क्या बताऊं लोमड़ भाई, आज नहीं कुछ पेट भरा, एक ही चूहा पाया मैंने, वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ, वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर आई हो, क्या बताऊं लोमड़ भाई, आज नहीं कुछ पेट भरा, एक ही चूहा पाया मैंने, वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ, वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। ठीक है, अब कौन सी पढ़ेंगे कविता? चलो बोलो चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू 2 भाइयों का नाम है, तो उनकी आपस में कैसे लड़ाई होती है और माँ क्या कहती है, चलो सुनते हैं। बोलो चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, चुन्नू बोला मैं भी लूंगा, चुन्नू बोला मैं भी लूंगा, मुन्नू बोला मैं भी लूंगा, झगड़ा सुनकर मम्मी आई, झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों के 2 चपत लगाई, दोनों के 2 चपत लगाई, आधा तूने चुन्नू बेटा, आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा, ऐसा झगड़ा कभी न करना, दोनों मिलकर प्रेम से रहना, दोनों मिलकर प्रेम से रहना। ठीक है, नन्हे तारे, चमको चमको नन्हे तारों, चमको चमको नन्हे तारों, आसमान के राज दुलारों, आसमान के राज दुलारों, देख तुम्हें हैरान बहुत हूँ, देख तुम्हें हैरान बहुत हूँ, मैं तुम पर कुर्बान बहुत हूँ, मैं तुम पर कुर्बान बहुत हूँ, लगते हो तुम हीरे मोती, लगते हो तुम हीरे मोती, किसकी है तुम में यह ज्योति, किसकी है तुम में ये ज्योति। ठीक है बच्चों, तो जो कविताएं मैंने आज कराई है और जो कार्य आपको दिया है, बड़े ही शांति, प्रेम और अनुशासन के साथ अपना कार्य पूरा करोगे और बहुत अच्छे बच्चे बनकर घर में ही रहोगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। जब तक कि हम अगली कक्षा में मिले, आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना और दिए